Good morning and assalamu alaikum to everyone. How are you all? I hope that you are feeling good at your homes, right? So, students, um, we are on chapter number 9, and the topic that we are going to discuss today is Archimedes' principle. So, students, before this, let's just stay back or think back that what we have been studied in our previous lecture. So, what we have studied in our previous lecture? Do you have any idea about that? So, I'll tell you that what we will study or what we had studied in the last lecture is about buoyancy and upthrust force, right? What is buoyancy and what is upthrust force? Buoyancy is the force that is being applied by the water to the object in this direction, that the object or the body will move in upward direction. This downward force is known as buoyant force or buoyancy or upthrust force. An object puts some force in downward direction, that is the weight of the body. So let's just begin our topic, that is Archimedes principles. So what is this principle? Archimedes was one of the scientists that he once take a shower in a bathtub. He went to the bathtub. When he get in the bathtub, he feels that the water is getting out, or he thinks that water is going out of the bathtub. So he realized that why the water is rising up and why does water get out of the bathtub. So what was the reason? He think about that, he get a conclusion, and for this he present his principle on his name is known as Archimedes principle. So जब वो बाथ टब में गया, क्या हुआ? बाथ टब में गया, उसने एक पाँव डाला, दूसरा पाँव डाला, जब उसने फुल बॉडी को अपने बाथ टब में डाला, he realized water rise up हुआ because why? There is an upthrust force, right? एक बॉडी है, बॉडी ने वाटर पर फोर्स लगाया, अपथर्स्ट फोर्स कम थी, दैट्स वाई बॉडी का फोर्स डाउनवर्ड लगा और वाटर जो है वो बाहर आ गया. फॉर एग्जांपल हम एक कंटेनर ले लेते हैं. इधर बहुत सारे एग्जांपल है तो हम आर्किमेडिस प्रिंसिपल के लिए डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल एक बलून ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, ठीक है, बलून को क्या करते हैं हम लोग, लास्ट वीडियो में भी मैंने एग्जांपल ली थी. एक सिलेंडर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें हम लोग बलून को एयर डालकर हम लोग क्या करते हैं, उसको वाटर में रखते हैं, वाटर की सरफेस पर रखते हैं और हम क्या देखते हैं कि वो वाटर जो है सरफेस पर बलून फ्लो कर रहा है. कैसे? अगर हम लोग फॉर एग्जांपल वी अप्लाइड अ काइंड ऑफ अप्लाइड अ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, बाय आवर सेल्फ विद आवर हैंड्स, ठीक है, हम बलून को अपवर्ड फोर्स देंगे, डाउनवर्ड फोर्स देंगे. वो सो व्हाट विल वी सी कि हम लोगों ने फोर्स लगा के बलून को तो नीचे ले आए, ठीक है. देन व्हाट विल हैपन इफ़ वी लीव दिस फोर्स आफ्टर सम टाइम और जस्ट दैट टाइम व्हेन वी लीव दैट फोर्स, in that condition we see that the balloon will come upward due to the buoyant force. There is a buoyant force that compels balloon to go in upward direction. So that is the buoyant force. Now what is the example of a wooden block? For example, we take a container and we add a block of wood into it slightly, ठीक है. So what would we see? For example, we have take a container and we take a brick, ठीक है, a piece of wooden or a brick, ठीक है. तो what will we see? We put another little container, ठीक है, toward it, ठीक है, and we put what? A wood or a stone or something like a brick, ठीक है. What will we see? There is a surface of water. When we put it on the surface, what will we see? That the water is balanced, ठीक है. When जब हम लोग क्या करते हैं, वुड या ब्रिक, फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन अ वुड, हम इसको वुड को क्या करते हैं, थोड़ा सा इमर्ज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, आधा पार्ट ऊपर है आधा नीचे है, ऐसे, ठीक है.
ऐसे आधा पार्ट ऊपर है वाटर के, आधा नीचे। हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा डूबा, पानी का प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ा और पानी थोड़ा सा इसके थ्रू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर सेकंड कंडीशन व्हाट विल वी सी, that in this water the brick is fully immersed. So what will we see, that in this second cylinder the water will rises, ठीक है, up to this condition, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल, इससे क्या होगा, दिस फॉर दिस ऑल्सो शो द आर्किमेड्स प्रिंसिपल, जो जैसे कि आर्किमेड्स साइंटिस्ट जो था, जब वो बात ले रहा था, वो टब में गया, पानी राइजेस हुआ उससे, तो ये भी इसी तरह के एक एग्जाम्पल है। लेट्स जस्ट बिगिन, आगे क्या होता है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं दूंगी, ठीक है। फ्लोटिंग ऑफ शिप्स की भी एक एग्जाम्पल है, हाउ, एज वी नो दैट शिप्स आर मेड अप ऑफ आयरन, राइट, ठीक है, आयरन और वुड समथिंग कुछ भी कहते हैं, ठीक है, ड्यू टू विच इट प्रोसेस ह्यूज वेट, ठीक है, ह्यूज प्रोसेस वेट क्यों करेगा, क्योंकि वो वुड का है या तो आयरन का है, दैट्स वाई वो जो होगा शिप जो होगा वो हैवी होगा, ठीक है। द शिप्स आर डिज़ाइन इन सच अ वे दैट अपथस्ट ऑफ वाटर ऑन इट इज़ ग्रेटर। शिप को ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसका एरिया भी बड़ा होता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है उसके। सो हम लोग क्या देखते हैं, शिप ऐसा डिज़ाइन किया गया होता है वो वाटर में नहीं डूबता, पानी में नहीं डूबता, ठीक है। वाई, क्योंकि उस पर जो अपथोर्स लग रहा होता है, अपथोर्स फोर्स वो जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द वेट ऑफ शिप, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक रीज़न, ठीक है। एज यू कैन सी कि वो वुड का होता है, आयरन का होता है, ठीक है, ह्यूज वेट, ठीक है। द शिप आर डिज़ाइन सच अ वे दैट द अपथर्स फोर्स ऑन अपथर्स फोर्स, ठीक है, ऑफ वाटर ऑन इट इज़ ग्रेटर, ठीक है। हाउ, then because its weight is lighter as compared to the weight of water or the buoyant force that has been applied to it. Thus, these ships can float safely on the surface of water. How? Because of upthrust force, because of their area, because they are in lighter, they are heavy weight, but they are specially designed in such a way they can float on the surface of water because of their area and because of the upthrust force, ठीक है। Now what is the next example, controlled floating and sinking of submarine means के अबरू कश्तियाँ किस तरह से जो हैं वो समंदर में चलती हैं, या किस तरह वो उसमें अंदर भी जा सकती हैं और ऊपर की तरफ भी जो है वो लैंड कर सकती हैं, ये चल सकती हैं, ये रोल ओवर कर सकती हैं। हाउ, फॉर एग्जांपल एक सबमरीन है, ठीक है, वो फ्लोट भी कर सकती है और सिंक भी कर सकती है इन वाटर, मतलब वाटर के अंदर भी जा सकती है और वाटर के ऊपर भी फ्लोट कर सकती है। हाउ, ठीक है, क्योंकि उसको उन्होंने सबमरीन को एक स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है कि वो सिंक भी कर सके और वो सबमरीन जो है ऊपर वाटर के फ्लोट भी कर सके, ठीक है। साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया। सबमरीन्स आर फिल्ड विद लार्ज हॉलो टैंक्स, ठीक है, उसमें हॉलो टैंक्स मतलब उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें वाटर जब वो चाहे उसमें भर जाए, जब वो चाहे जब वाटर निकल जाए, ठीक है, और उसमें हॉलो टैंक्स होते हैं, ठीक है। if submarine wants to dive, वो अगर सिंक करना चाहती है इन द वाटर, देन द टैंक्स वो जो उसके अंदर हॉलो टैंक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो फिल हो जाएंगे, ठीक है, सब बिकॉज ऑफ ग्रेटर देन द अपथर्स्ट फोर्स, ठीक है। वाइल इफ़ द सबमरीन वांट्स टू कम टू द सरफेस ऑफ वाटर, अब वो नीचे थी तो टैंक्स फिल हो गए, ठीक है, वाटर की वजह से जब वो टैंक्स फिल हो गए तो सरफेस जो हो जाएगा उसका लार्जर हो जाएगा, उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा, उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से सिंक हो जाएगा, ठीक है। जब वो वाटर टैंक्स जो होंगे वो उनको खाली कर दिया जाएगा, उनका वाटर एक्सपेल कर दिया जाएगा, तो आप देखेंगे जो वो शिप्स या वो जो सबमरीन है वो खुद ब खुद वाटर की सरफेस पे फ्लोट होती हुई आ जाएगी, क्योंकि उसका जो वेट होगा वह हैवी की जगह वो लाइट हो जाएगा, ठीक है। जो अपथर्स्ट फोर्स होगी वो उसे कंपेल करेगी कि वो फ्लोट करे, क्योंकि उसका जो वेट होगा वो कंपेयर हो जाएगा, लेस हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द वेट व्हेन जब उसमें टैंक्स फिल हो गए थे। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन। आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा आर्किमेड्स प्रिंसिपल क्या होता है, राइट। When a body is immersed in a fluid and a body is experience an upward force equal to the weight of fluid, ठीक है, it is same as that what we have studied about in last topic, that is upthrust force और the buoyant force, right। इसमें भी सब कुछ सेम ही है, but slightly different with an examples and mathematical forms, ठीक है। एक बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल एक cylindrical बॉडी है, इसको हमने immersed किया, ठीक है, into the water, into the liquids, what we feel that there is a buoyant force जो इसके वेट के अकॉर्डिंग, फ्लूइड के वेट के अकॉर्डिंग इस पर लगेगी, ठीक है, और उसको कंपेल करेगी कि ये ऊपर जाए, ठीक है। तो लेट जस्ट सी इसका वेट ज़्यादा है या द बायन फोर्स, इफ़
दिस इज़ ग्रेटर, इफ़ इसका फोर्स ज़्यादा होगा तो ये नीचे डूबेगा, ठीक है। अब बायन फोर्स ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, द बायन फोर्स क्या करेगा, इसको कंपेल करेगा और ये फ्लोट करेगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस फिगर आप लोग देख सकते होंगे दिस इज़ अ सिलेंडर, ठीक है। और थ्रू एक्सप्लेनेशन को हमको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि वी हैव टेकन अनदर सिलेंडर, ठीक है, एंड वी डिप्ड इट इन द वाटर, ठीक है। वी डिप्ड इट इन द वाटर विद द एरिया ए, ठीक है। P1 is the upward pressure that has been applied by this short cylinder, and P2 is the pressure that is being applied by the water on this cylinder, ठीक है। Now what is H1? H1 is the height from the surface of tank, ठीक है, from the surface of tank to the area, to the area where the शॉर्ट सिलेंडर हैज़ बीन और स्मॉल सिलेंडर हैज़ बीन एंडेड, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इतना डूबा हुआ है, तो इस एरिया तक को यहाँ तक H1 कह देंगे, और फॉर दिस H से लेकर up to this area we can call it H2, ठीक है। and the full length of this cylinder is known as H, ठीक है। now F1 is the force जो बॉडी लगा रही है in downward direction over the water, and F2 is the upward force जो water लगा रहा है in a downward direction to compel this cylinder to move in upward direction. Now let's just see what just happened, ठीक है। as we know that how we can find H, or height, total height is equal to H2 minus H1. Now let's just come to the mathematics portion. Now what will we see? We see that pressure is equal to force per unit area. We know that pressure, जितना pressure लगाएंगे, ठीक है, उतना जो होगा फोर्स भी होगा, ठीक है, और एरिया के अकॉर्डिंग लगेगा, नहीं, ठीक है। एज यू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू pressure into area, and as we know that pressure is equal to rho, for rho which is the density, G is the gravity, and H is the height. So pressure depends upon these three things. Now what is the F1 force? F1 force is this one force that is applied by the object over the liquid, ठीक है, और the fluid. Now what is the F2 force? F2 force is the upthrust force or the buoyant force. As we know that F is equal to PA. P is the pressure and A is the area. Now when the F1 force is applied over the container, the P1 is the pressure that is being applied over the F1 force with the area A, and same with the pressure 2 and area, ठीक है। Now how we can find it? As we know that F1 is equal to P is equal to rho G. Put this value of P into the equation 1 with A, and put the same equation of P with H2 height with area. Now what we can see, then the total F net force is equal to F2 minus F1. Now by calculating we can see that rho G H2 into A minus rho G H1 minus into A is known as, now what we can see, rho G is the same H2 minus H1 into A. This is the total F net force, ठीक है। This is the force that we have been gained due to this experiment. So in this book, how this example has been said, these two methods are slightly same, but if you feel this way of mathematics easy, so you can solve this. So what is this? This is a cylinder, and we dipped a wood into it. Fw is the upward thrust force, W is the downward force that the would have been applied, and F net is the total force, right? Now in the second example we have coin. W is the downward force that is being applied by coin, and Fw is the upward force, and F net is the total force. Right now let's just begin with the mathematics in your book. As we know that F net is the total force, and Fp is the force that is being applied by fluid or water in upward direction into weight of object, right? So now we can apply Archimedes principle using m naught represent the mass of the submerged object, and mf as the mass of fluid, g is the acceleration. As we know that what is F net? F net is equal to as we know that F is equal to mg, mass and gravitational field, right? Now this is the value of Fb, this is the value of this weight, ठीक है। Now as we know that P is equal to mv, right? Now what we see, can F is equal to F net is equal to mg. We put the value of m, which is equal to Pv,
with G minus P naught V over the G. So F net is equal to P V minus PV into G. ठीक है, as I told you people before this, right? Now let's just begin to the more explanatory. ठीक है, a simple relationship between the weight W of a submerged object of mass m naught and the density and the buoyant force Fb on the object by fluid displaced of the mass this and density this found considering these ratios. Now we have to find the value into the ratios. ठीक है, now W by Fb into F net. ठीक है, now F net, this is the F net is the total force. F net is equal to W into divided by Fb. ठीक है, now what we can see, W is equal to m naught G, W is equal to m naught G and Fb is equal to m1 G. ठीक है, और m b g. ठीक है, Fb है तो m b g, F is equal to m g m b g m naught g. ठीक है, now what, g and g cancel हो जाएगा. now W by Fb weight into force is known as, now this is the weight of the body and this is the upthrust force which is equal to this. Now we have to solve our every kind of each numerical related with this formula. ठीक है, this and V is equal to V B which is the V which is equal to volume. This is the upthrust force and this is the volume, this is the object weight. ठीक है, object volume, this is the total volume. Now what we can see that m is equal to pv and momentum is equal to p equal to mv and m is equal to pv. Now what we can see, put this value in equation 1. ठीक है, now this W by Fp is equal to what is equal to m p not v, pb v, v cancel, and W by Fb is equal to pressure 1 that is being applied by the upthrust force and the pressure that is being applied by the object. ठीक है, now this is your lab work, this is your example 7.4 and you can solve it with this formula. ठीक है, with this formula W by Fb, this is density this is about of the object, this is the density of the fluid or water, and you can solve it like putting this into, and we can multiply each over this, then we can find the values from the question, write it down over here, cancel this n, divide this value over each other and you can get the answer, right? This is very easy example. So students, with all these examples and all these lectures, you have been greatly understandable, right? So students, if you have any kind of problem, you can ask me. Till then, take care and Allah Hafiz.